Okay, so I welcome you, Nabil. Hope you are really feeling well, safe and sound. Let's start with the session with whatever people we have. It's very nice session. It's about agile principles. Agile is a very common variety in how methodology work. बहुत सारे लोग नाम रहे होगा. तो जस्ट बेसिक हम सुनते हैं अजाइल अजाइल. तो सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो वी यूज टू यूज बेसिकली वाटरफॉल मेथड. वाटरफॉल भी नहीं बोलना चाहिए उसको, रॉकफॉल बोलना चाहिए. वाटर इज मोर फ्लेक्सिबल. वेरएज जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता था उसमें क्या होता था, देयर वर रिक्वायरमेंट्स, देन देयर वाज लेट्स से डिजाइन और आर्किटेक्चर, देन इट यूज्ड टू बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज. Then once the software is developed and tested, then it will, sorry, once it is developed, it will basically move to testing stage. And once testing stage is cleared, it will be deployed. Once it is deployed, there will be another testing, system integration testing, and then software would be maintained. तो ये sequential cycle होता है. Agile is the new methodology where things need to move fast based on customer driven cultures or based on customer driven requirements. चेंज हो जाते हैं रिक्वायरमेंट फटाफट, राइट. और अभी टाइम नहीं है किसी के पास. तो एवरीवन वांट्स टू गेट देयर थिंग्स डेवलप वेरी फास्ट. तो कुछ साल पहले अजाइल, some people, some software giants, in the sense some software scientists, big players in the field, 12 people came together, 12 or so people came together, and they created an agile manifesto. तो अजाइल में क्या होता है, देयर आर बेसिकली 12 प्रिंसिपल्स दे हैव गिवन. ठीक है, तो they have just given some 12 guidelines or 12 principles which should be followed so that agile teams can be formed or fast software development can happen, or you can build and develop and test and deploy and let's say deliver or ship your product very fast. तो ये साइकिल का टर्न अराउंड टाइम करने के लिए अजाइल होता है. द अजाइल वर्ड इटसेल्फ मींस फास्ट और क्विक मूवमेंट. जैसे चीता या टाइगर होता है तो हम कहते हैं इज वेरी अजाइल और इट मूव्स वेरी फास्ट. देयर इज एजिलिटी, तो देयर इज अजाइल. तो वाटरफॉल का भी कोई फॉलो नहीं करता है. अजाइल इज व्हाट इज इट रिक्वायरमेंट. वी कीप हियरिंग दीज, वी कीप हियरिंग दिस वर्ड, एंड देन there are lots of now tools, systems and processes around this. तो अभी जीरा अभी सुना होगा कुछ लोगों ने. There is a software called as Jira. It's a Jira cloud. It's by the company Atlassian. They have lots of good products, Jira or even Confluence, and many more for CI/CD also. In products, ये product क्या करते हैं? They support agile methodology. So basically agile, as I said, there are just 20 principles at its very core. It's just द गाइडलाइंस. जैसे हमने काफी सारे सेशंस में पहले देखा है, कस्टमर डेवलपमेंट का सेशन हुआ था, उसमें देयर वर सम प्रिंसिपल्स. So these are guidelines and not hard bound rules, but इनके अराउंड टू बी एबल टू फॉलो दीज रूल्स कुछ टूल्स डेवलप हुए हैं, कुछ प्रोसेसेस डेवलप हुए हैं. वी फॉलो डेली स्क्रम, राइट. तो कानबान बोर्ड होता है, एंड देन देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स. So today what we'll see, we'll go through the principles at its very core. What is agile? तो सबको समझ में आ जाएगा कि agile क्या है और at its core क्या उसमें ये है basically guidelines. And then we will see just 1 or 2 slides about how we are following it in minimal, because agile में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें follow करते हैं. Now there are certifications also. There is project management certifications, there is agile, there is scrum master certification. तो उसमें बहुत सारे processes और guidelines आ जाते हैं. There is sprint velocity, there are hundreds, thousands of terms in Jira itself. जो there is so lots of complexity around there. But हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या है अजाइल, एंड देन व्हाट वी फॉलो एज अ मिनिमल वर्जन, और फिर हाउ टू मूव वेरी क्विकली और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग क्विकली. ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक बेसिक्स? Shall we start? Yes, ma'am. Okay, so let's get into the topic now. जो भी आप लोग just pay attention, and whatever, even if you don't understand, it's okay, we can discuss or you can ask questions, but try to understand that it's around these basic guidelines, lots of
tools and processes have been developed. तो अभी agile के नाम पे बहुत सारा complexity है, as I said, but at its very core what it is we will see with this simple guide. ठीक है, let's start. So there are 12 guidelines, as I said. तो हम एक एक करके, there are one slide each in this beautiful, very colorful presentation. So basically bear with me here while we start with the first one. तो first क्या होता है? Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. है ना? तो इसमें दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है बस, अर्ली एंड कंटिन्यूस. अर्ली डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, बस ये दो वर्ड्स भी हम समझ गए तो दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड. कस्टमर को जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं या जो अभी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हम शिप कर रहे हैं कस्टमर को, गो लाइव कर रहे हैं, है ना, कस्टमर को दे रहे हैं यूज करने के लिए ऑनलाइन और लाइव, तो द प्रायोरिटी इज अर्ली एंड कंटिन्यूस. व्हाई? बिकॉज इट शुड गो अर्ली, because we should fail fast. For example, there are bugs, then we should fail early. तो जैसे बग है और पता नहीं चला, बहुत लेट पता चला, समझो आपने टेस्टिंग, आपने लिखा कोड और टेस्टिंग भी किया, ऐसा नहीं कि टेस्टिंग नहीं किया, बट देन यू डिडंट कैच सम ऑफ द बग्स, कुछ बग्स रह गए और वो बग्स बहुत बाद में पता चला आपको, एंड देन यू लॉस्ट लॉट्स ऑफ रेपुटेशन ओवर देम, है ना. मे बी कस्टमर्स भाग गए उस बग की वजह से, आपने कुछ ऐसा तोड़ दिया है ऐप में बाय क्रिएटिंग समथिंग एल्स एंड देन कस्टमर्स विल रन अवे. तो क्यों हुआ ये? क्योंकि लेट डिटेक्ट हुआ. तो लेट डिटेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज द प्रोसेस इज नॉट वेरी एजाइल, है ना, प्रोसेसेस हैज गैप्स. तो वो फर्स्ट रूल ऑफ अजाइल सेज दैट यू शुड डिलीवर वेरी क्विकली एंड यू शुड डिलीवर वेरी अर्ली. सो अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी इज वेयर पूरा डेवऑप्स आ जाता है इसमें. ठीक है, द एंटायर डेवऑप्स इज बेस्ड ऑन लाइक the guidelines of continuous deployment and continuous delivery and continuous integration, CI/CD guidelines. So the highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery. Let's go to the next one. ठीक है, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट. तो वाटरफॉल में क्या होता था, देखो ये एक एक गाइडलाइन जो है एजाइल की, ये क्या किया है ना इन लोगों ने, सी दीज गाइडलाइंस दे हैव ट्राइड टू ब्रेक आउट ऑफ सम ओल्ड शेल्स. जैसे वाटरफॉल मेथड में क्या होता था कि एक बार रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गया, देन यू कैन नॉट चेंज द रिक्वायरमेंट. बट इज दैट द ट्रूथ? नहीं. अभी एपीआईज हम लिखते हैं तो एपीआईज में भी डेली बेसिस पे चेंज होते हैं. आई वाज जस्ट टेस्टिंग कोड, एंड वी कीप चेंजिंग बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट्स कभी एक्चुअली फ्रीज हो जाएगा ऐसा नहीं है. इफ योर प्रोडक्ट इज लाइव और इफ यू आर शिपिंग टू अ कस्टमर विच इज लाइव, then things may keep changing because customers are changing, because markets are changing, है ना. डेली बेसिस पे नए चेंजेस आते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी चेंज होगा, प्रोसेस भी चेंज होंगे, टूल्स भी चेंज हो जाएंगे, सिस्टम्स भी चेंज हो जाएंगे. बट वाटरफॉल मेथड में क्या होता था, इट वाज वेरी रिजिड, है ना. यू कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम गाइडलाइन. एक बार आपने ले लिया कस्टमर से एंड देन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन आफ्टर 1 year ओनली यू विल डिलीवर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक 1 year टू डिलीवर विद दिस सीक्वेंशियल वाटरफॉल मॉडल जो मैंने बताया कि पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर बिजनेस एनालिस्ट को देंगे, फिर वो सारा स्टोरीज बनेगा, फिर उसका डिजाइन होगा, फिर आर्किटेक्चर होगा, फिर डेवलप, फिर टेस्ट, फिर है ना, फिर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. तो ये वाटरफॉल होता है. बट एजाइल में कैसा है, वी एस्पायर टू मूव वेरी क्विक. We aspire to work on all parts of the system at once, maybe in different teams. So if agile is followed at a very big practice or there are lots of products, तो फिर multiple agile teams can work on. You can call them squads also, squads as we will see. तो एक terminology में उसको squads भी बोलते हैं. You can say mini powerful charged teams to do something, है ना, agile teams. तो सेकंड प्रिंसिपल में क्या होता है, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर रिक्वायरमेंट्स नॉट टू चेंज. पहले वाटरफॉल में क्या होता था, यू हैव द क्लाइंट और कस्टमर हैज टू साइन द एग्रीमेंट कि एक बार रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गया देन ही कैन नॉट चेंज. सो इट वाज वेरी रिजिड. बट अजाइल में क्या होता है, कस्टमर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इवन चेंजिंग द रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट. ठीक है, रादर स्प्रिंट्स में ही हम करते हैं. स्प्रिंट user stories are created. From user story there are user story points, they are divided into tasks, and then stories are generally taken into each sprints at a high level in agile process, and that every sprint
Sprint demo and sprint planning and sprint retrospective meetings are used to manage the sprint and the velocity of development. Okay, at high level. So this will be agile welcomes changing requirements to adapt to the changing atmosphere or market. Let's go to the third one. Deliver working software frequently. तो ये फिर से हमने देखा अर्ली वाला पार्ट आ गया यहाँ पे. From a couple of weeks to a couple of months with a preference to the shorter times. तो यहाँ पे बताया there are दो ही देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिए हैं. couple of years नहीं बोला यहाँ पे. couple of है ना, the timeline is not very big. That principle में ही उन्होंने एक they have hinted that it should be couple of weeks to couple of months. और आपका प्रोडक्ट अगर समझो एक रिलीज लेने को if we are taking 1 year, then there is some problem. It could be couple of weeks to couple of months with a preference to shorter time scale. So try a couple of weeks. So that's why always sprints or sprint plans you will always see are managed around weeks. कोई भी बोलता नहीं कि हमारा स्प्रिंट है ना 3 महीने का होता है. 3 महीना भी नहीं होता है. So in the biggest I have seen is I think 6 weeks, maybe 5 to 6 weeks in very, very complex products. But typically, on an average, it's just 3 to 4 weeks or 2 weeks or even 1 week. So it's always in weeks. It's not in months. It's not in years. Deliver working software frequently. फर्स्ट प्रिंसिपल में भी हमने देखा था ये और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी को इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे भी. देन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को अडेप्ट किया है. देन इन द थर्ड प्रिंसिपल अजाइल इज बेसिकली टेलिंग अस that we should take a preference to shorter times and not very big ones because we need to ship very quickly to the customer. Okay, let's go to the fourth one. Business people and developers must work together daily throughout the project. Very simple. But ये झगड़ा हमेशा चलते रहता है. This is like वो देखो उसका जैकेट और ड्रेस उल्टा है. इसका जो कलर का ट्राउजर है उसका वो कलर का कोट है दूसरे वाले बंदे का. What does it say? They are contrasting because business will look at the problem from one angle and engineers or developers will look at the problem from a different angle. तो ये झगड़ा हमेशा का it's eternal cold war जो चलता ही रहता है in software development because business side से कौन-कौन होता है. business side से product manager होगा, product owner होगा, then you may have a BA or business analyst, you may have a scrum master also. Then you may have unblocker, delivery manager, and so and so and so. Developer side से कौन-कौन होगा? Developer side से you will see typically people like software developers, architects, testers, है ना, lead architects, tech leads, enterprise architects, and all. So there is always conflict between this. Why? Because they don't understand the full picture. So engineers will look at the problem always from a technical angle. They would want to solve the problem from their own. They would want to give preference to their own टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग स्पेशलिटी. कोई बोलेगा यार मुझे पाइथन आता है तो आई विल राइट इट इन पाइथन इवन द रिक्वायरमेंट इज टू राइट इज इन जावा बट आई विल राइट इट इन पाइथन. लेकिन मेरे को पाइथन आता है. इंजीनियर विल से, इंजीनियर में से, बिजनेस विल से नो नो वी नीड इट इन जावा ओनली, है ना. दिस इज जस्ट वन सिंपल एग्जांपल. तो अजाइल क्या बोलता है? अजाइल बोलता है कि आपको इस तरह से टीम्स बनाना है, आपको इस तरफ से टीम को कॉन्ग्रुएंट बनाना है. लाइक आवर टीम इज कॉन्ग्रुएंट. Like I keep saying, we are basically one this thing 11 simple team. तो उसमें क्या होता है? We are all working from different capacities. We have front end people working, we have testing people working. Not we have business people also joining. Okay, the team is small. The idea is to look at each other and understand each other's problems and share their views so that the conflicts may resolve. Get further, build projects around motivated individuals. You need motivated individuals around agile. क्यों motivated होना चाहिए? Can a demotivated team be able to do something meaningful? Or let's say, can a demotivated team be able to manage the velocity that agile expects? Or can a demotivated team be able to deliver on time? तो maybe इन सबका आंसर नो होगा. क्यों नो होगा? Because motivation is the fuel. Motivation is the energy.
Motivation is the happiness factor, which takes you deeper into your work or goal. Now, Agile says that you should build projects around motivated individuals. So, motivation के around भी बहुत सारे processes हैं. Agile में एक Agile retrospective meeting भी होता है. तो retrospective meeting हम follow नहीं करते हैं. It's in our this thing, but उसमें क्या होता है? You complete the sprint और फिर एक you see like a post-it notes का एक chart हम बनाते हैं online, and we see like what was good in the last sprint, what was bad, and what can be improved. तो सब लोग अपना अपना फीडबैक देते हैं उसमें, लाइक है ना, फ्रंट एंड टीम विल से दिस वाज गुड, दिस वाज बैड एंड दिस कैन बी इम्प्रूव्ड. एवरीवन ईच वन ऑफ द फोक्स फ्रॉम द स्क्वाड और द एजाइल टीम विल गिव देयर फीडबैक. दैट इज कॉल्ड अ रेट्रोस्पेक्टिव. तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है, बिकॉज पीपल विल से अरे ये आपने बहुत अच्छा किया लास्ट स्प्रिंट में और दिस वाज डन वेरी क्विकली. तो ये मोटिवेशन के लिए होता है. ठीक है, सो मे बी वी विल डू समथिंग आल्सो सिमिलर और नॉट और बेसिकली समथिंग न्यू इन दिस डायरेक्शन. बट द आइडिया इज मोटिवेशन. तो हर एक प्रिंसिपल में आप देखोगे ना, तो समझने के लिए आसान है. देयर इज 1 or 2 की पॉइंट ओनली. फर्स्ट वन वाज अबाउट अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी. सेकंड वाज अबाउट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. थर्ड वन वाज आल्सो अबाउट शॉर्ट टाइम स्केल and frequency. Fourth is that you should bridge the gap between engineers and business. Then fifth is about motivation. So give them the environment and support they need and trust them. So basically you create a squad and then you trust them. है ना. नहीं तो बोलेंगे कि चलो ये टीम को काम दिया है किसी को, लेकिन हमको रोज फॉलो अप लेना पड़ता है या रोज टीम के साथ उतना ही घंटे बैठना पड़ता है. टीम है 10 लोगों की जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी, बट जो और 10 लोगों की एक्स्ट्रा टीम है, बिजनेस टीम है या सेल्स टीम है, उनको भी साथ में डेली बैठना ही पड़ता है. देन दैट इज नॉट अ गुड वर्किंग मॉडल, क्योंकि उसमें दोनों का टाइम खराब हो रहा है, राइट. So if people are motivated, if people have the support they need, very important है ना. If you don't have कि किसको बोलने का, किसको कंप्लेन करने का, कैसे, if you are stuck somewhere, how to resolve this, if you don't know the steps, then you should be able to ask the support. If you don't know whom to ask, you should, it's a problem. So you should know someone, at least you can ask. If there is a scrum master, you can ask him. In this short team, you can ask the team or your colleagues and so on. So the environment must be friendly. The team should have the support and the trust. They need to be able to do the job. So motivation बहुत important. Okay, let's see one more and then I'll take a pause after that. Maybe we'll see if you're going on that. Fifth is the most efficient and effective method of conveying information is face to face. So face to face को preference दिया है basically. It's very simple and self-explanatory. But unfortunately we are all working online due to this work from home kind of age now, and we are all remote, but we keep connecting often on the videos. But you see there is a lot of importance given to face to face. इसमें टाइम सेव होता है सबसे पहले फेस टू फेस में. आपने कभी रियलाइज किया है कि यू आर टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन और आपको कुछ काम बताना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ डायरेक्शंस देना है कि यहाँ पे क्लिक करो, ये करो, वो करो, एंड देन ये करो, तो कितना समझाना पड़ता है, राइट. एंड देयर इज लॉट्स ऑफ गैप्स स्टिल, है ना, फॉर मिसअंडरस्टूड, बिकॉज वॉइस कट जाती है बीच में, ऑडियो में, वीडियो में, हमें पता नहीं चलता है, डिले होता है, स्क्रीन नहीं दिखता है कई बार. सो नेटवर्क चैलेंजेस भी होते हैं. फेस टू फेस में क्या होता है, आप बहुत कम देर में बहुत सारा बात कर पाते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी काम करता है और बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी बातें कह पाते हैं. दिस इज वन मोर बेनिफिट. अनदर बेनिफिट जो अभी हमने कवर नहीं किया यहाँ पे, दैट इज कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन होता है ग्रुप में ज्यादा. जब हम फेस टू फेस होते हैं, यू बेसिकली टिपिकली ड्रॉ ऑन अ व्हाइट बोर्ड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर लाइक अ डूडलिंग. और कोलैबोरेशन होता है, यू एंड देन देयर इज शेयरिंग ऑफ अदर इंफॉर्मेशन. जो हम लेट्स से इन preference in face to face, we typically end up creating more better emotional bonds, let's say, and be able to share more information. So it's very powerful. I'm just trying to keep it interactive so that you don't lose me here, and this you're all it's basically better to understand. Okay, so face to face is important. Although we are online, but don't mind, we keep meeting face to face. But nonetheless, it is definitely more powerful way of communication. But yes, audio and video has its own power and uses, so definitely it can be also leveraged in a nice way. Then let's move to the next principle. Working software is the primary measure of progress. Very very important. तो पहले क्या होता था, प्रोग्रेस के मेजर बहुत सारे हो सकते हैं.
कोई कंपनी बोलेगी कि हमारे ये केपीआईज है ना। फेसबुक विल मॉनिटर समथिंग एल्स, XYZ कंपनी विल मॉनिटर समथिंग एल्स। कोई बोलेगा हमारे इतने सेल्स होते हैं तो ही हमारा वी आर सक्सेसफुल। अजाइल क्या कहता है ना, अजाइल सेज दैट योर वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द मेजर ऑफ प्रोग्रेस। एंड जैसे मैं हर स्लाइड में आपको एक एक कीवर्ड बता रहा हूँ जस्ट टू कीप इट इजी फॉर यू, है ना। सिमिलरली मोटिवेटेड देखा हमने, देन फेस टू फेस देखा, देन दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस स्लाइड इज वर्किंग। वर्किंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई भी लिख सकता है, सॉफ्टवेयर कैन बी एज क्रैपी एज यू मे इमेजिन, है ना। सॉफ्टवेयर में भी बगी ऐप हो सकता है लेकिन चलता नहीं है, बहुत सारे ऐप्स हमें पता है ना। वर्किंग होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए मींस इट शुड बी, और इवन इफ इट इज एन एमवीपी और इट इज अ गो लाइव फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट, द गोल ऐसा नहीं कहा है इसमें कि आपको इट शुड बी पिक्सल परफेक्ट एंड इट शुड बी 100% वर्किंग। द आइडिया इज वर्किंग, इट कैन बी बगी, एक दो बग्स है मे बी, बट देन लेट्स से बट इट इज वर्किंग। Your MVP is definitely to be able to show to the customers, and at least the heartbeat features are working. So what is the measure of progress? The measure of progress is working software. तो अगर हम इसको अजाइल के एंगल ग्लास से देखेंगे, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके वो बंदा खड़ा है, तो हम मैग्नीफाइंग से अगर इसको देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारा स्प्रिंट हो गया, समझो अभी स्प्रिंट जो भी चल रहा है हमारा नंबर, और उसके लास्ट में व्हाट इज द मेजर ऑफ प्रोग्रेस? द मेजर ऑफ प्रोग्रेस इज वर्किंग सॉफ्टवेयर। तो आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर टीम आप काम कर रहे हो, किसी फीचर पे काम कर रहे हो, द working potency of that feature in its all lights is the measure of progress and not anything else. Document बनाया कि नहीं, maybe secondary, है ना। bug fix सारे हुए कि नहीं, maybe secondary, but your software should be working। ठीक है, let's move further and see more interesting slides. So keep with me here. The sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. कोई बताएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है इस स्लाइड में? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस स्लाइड, लाइक जैसे हम क्विज की तरह देख रहे हैं इसको, एक गेम की तरह। सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस? सो let's call it the word or the phrase maybe. So constant pace is right, constant pace indefinitely, indefinitely is also very important. Indefinitely क्यों बोला है? क्योंकि changing requirements हमने देखा था पहले प्रिंसिपल में ही, और उसके बाद तीसरे प्रिंसिपल में भी देखा था कि requirements will keep changing and you have to fail early, you have to deliver fast, you have to ship quickly. तो ये पेस जो है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो है टीम की, एजाइल टीम की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। अगर डिमिनिश हो रही है, समझो समझो वेलोसिटी होती है टीम की, एजाइल में हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जब जाते हैं तो हमें पता चलता है देयर इज अ टीम वेलोसिटी। टीम वेलोसिटी इज नथिंग बट हाउ मच योर टीम साइज, जो भी टीम साइज है, समझो देयर आर एजाइल टीम्स ऑफ साइज स्टार्टिंग लेट्स से 3 to 5 to up to let's say 12 to 15, इतनी बड़ी भी टीम्स होती है। तो टीम की एक वेलोसिटी होती है कि समझो 15 स्टोरी पॉइंट का एक स्टोरी है और ऐसे 10 स्टोरीज टीम कर लेती है एक हफ्ते में, 8 लोगों की टीम। तो ये एक स्पीड हो गई, है ना। और उसी स्पीड से फिर वो आगे का मेजर होता है कि चलो 15 स्टोरी पॉइंट्स के इतने इतने स्टोरी टीम अगले हफ्ते में भी कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे वेलोसिटी एक मेजर होता है हर स्प्रिंट के बाद, टिपिकली इन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, नॉट वी आर नॉट मेंटेनिंग ऑल दिस येट, बट ऐसा होता है काफी सारे कंपनीज में भी, काफी सारे एजाइल कल्चर्स में ये वाला होता है, वेलोसिटी पे बहुत ध्यान देते हैं वो लोग, है ना। तो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट होता है स्प्रिंट टू स्प्रिंट, कि हमारी वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। जैसे हमको पता है क्रिकेट में होता है ग्राफ, एवरेज होता है, बैट्समैन का होता है, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो आपके माइंड में आ रहे होंगे, राइट, दैट यू कैन रिलेट। तो एक वेलोसिटी होती है टीम की जिसको मेंटेन करना पड़ता है, एक तो पॉइंट। सेकंड थिंग इज इंडेफिनिटली, इंडेफिनिटली इज बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग and the project may be delayed or the project may finish early, there may be lots of contingencies, है ना। people may leave the job in between और even client may change, तो फिर दूसरा मैनेजर आ जाएगा क्लाइंट से, तो फिर से रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट्स इंडेफिनिट। तो यू हैव टू बी एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट पेस। ये कैसे होगा? इसके लिए हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा कि समझो कोई छोड़ के गया तो क्या होता है, अगर स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स आ गई किसी स्प्रिंट में, 15 पॉइंट वाली स्टोरी नहीं थी, 60 पॉइंट वाली थी, तो उसको 4 में तोड़ना पड़ा, तो 15 पॉइंट की 4 हो गई, 15 4 से 60। तो 4 स्प्रिंट में लेना पड़ेगा या ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो यू विल बी एबल टू, someone or scrum master or the team should be able to maintain this pace
ऐसा नहीं कि है ना कि एवरी वीक आपकी लाइक लेट्स से द टीम हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक सडनली 50 हो गई या फिर सडनली 1 हो गई, तो देयर इज नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कीप डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग, है ना, in a very haphazard way. You should be able to maintain a smooth pace, constant pace, measurable pace. जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स अजाइल टीम्स में ये मॉनिटर होता है, they will monitor the velocity graph every month, everyone, scrum masters, BAs, clients, everyone. ठीक है. Let's go to the next principle. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. तो ये क्लियरली बताया है इसमें कि टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन, ये दो वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है, दो फ्रेजेस. Technical excellence is about a lot of things, about bug-free code, about your working software, about using good technology, about not leaving technical debt, है ना. तो टेक्निकल एक्सीलेंस में बहुत कुछ आ गया, कोड ऑप्टिमाइजेशन भी आ गया, कोड रिव्यू भी आ गया, सोनार क्यूब भी आ गया, सब आ गया उसमें. ठीक है. गुड डिजाइन में क्या क्या आ गया? गुड डिजाइन में आ गया आर्किटेक्चर आ गया. गुड डिजाइन में यू हैव अ गुड डॉक्यूमेंटेशन. गुड डिजाइन में यू हैव ऑल द डिजाइन प्रिंसिपल्स, सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा यहाँ. ठीक है. सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसमें आर्किटेक्चर भी आ गया. तो कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस, गुड डिजाइन एनहेंसेस एजिलिटी. तो अगर ऐसा नहीं है कि आपका टेक्निकली एक्सीलेंट नहीं है, या समझो डॉटनेट या पुराने टेक्नोलॉजी में किया है, तो दैट्स नॉट गुड. नो, it's not like that. But if you are maintaining this, you will be more agile. Your agility will improve. You will be a better you will better and be quickly be able to deliver not only working but very robust and scalable software. आप सिर्फ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आप अच्छी चीज डिलीवर कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी क्विकली एबल टू मेंटेन, यू आर वेरी क्विकली एबल टू स्केल इट ओवरनाइट. किसी का 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स था और प्रमोशन चलाया, 10 मिलियन हो गया एक ही वीक में. एक वीकेंड पे आपने फ्राइडे को 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे आपके, फॉर एग्जांपल, और एनी प्रोडक्ट और एनी कंपनी, टेक दैट एग्जांपल, और एक प्रमोशन चलाया जोरदार, और फ्राइडे के बाद सैटरडे को, संडे को 10 मिलियन का ट्रैफिक आ गया. तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट विल ब्रेक? जस्ट एनीवन. किसी को लगता है क्या ब्रेक हो जाएगा? और किसको लगता है कि नहीं होगा ब्रेक? Great. So there is no right or wrong answer for this. So don't worry or don't panic. There is no wrong and right answer. आपकी टीम कितनी एजाइल है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रोबस्ट है, उस पर डिपेंड करता है ब्रेक हो जाएगा कि नहीं. ठीक है. करेक्ट आंसर इज दिस. बट टिपिकल केसेस में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अगर ओवरनाइट ट्रैफिक बढ़ता है, लेट्स से बाय 1000 टाइम्स, एंड इफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट स्केलेबल इनफ, तो बहुत सारे गैप्स होंगे, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाएगा. It may not just break on scalability, but it may break on lots of other reasons also. Okay. So agility means you are able to scale also very quickly. That's why technical excellence and good design. Let's move further. Simplicity, very very important. Simplicity is a very nice topic. इस पे हम अलग से presentation भी करेंगे maybe. Simplicity is a very nice topic. इसमें बहुत सारे और भी points हैं. So we will cover in more detail. But understand now why simplicity is required in your agile process or your code or testing. The art of maximizing the amount of work not done is essential. तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया है. I'll try to simplify it if you don't understand. Work not done should be more. समझो 15 चीजें करनी है हमें, और उसमें से एक्चुअली उसको ऑप्टिमाइज करके देखा तो एक्चुअली हम 7 चीजें ही करनी है, 8 चीजें फालतू ही कर रहे थे. तो जो जो मिनिमाइज हम कर सकते हैं वो मिनिमाइज करें. सिंप्लिसिटी इज द आर्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग थिंग्स, है ना. कॉम्प्लेक्स नहीं किया है उसको. उसी स्टोरी को मतलब 5 यूजर स्टोरी में लिखा जा सकता है, एंड वी हैव लेट्स से मेड 15 स्टोरीज आउट ऑफ दिस एंड मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लेक्स, unnecessary duplicating the stories and unnecessary adding more complexity. So that's not recommended. We should simplify. We should keep it simple. We should take simple, write the story in simple words, and the maximizing the amount of work not done. तो जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है. That is simplicity. Okay, let's go further. The best architectures requirements designs emerge from self-organizing teams. Self-organizing teams का importance यहाँ पे बताया है. Self-organizing teams are very powerful. They are empowered in itself.
तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम का मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीटिंग्स और टीम्स। कुछ टीम्स में और मीटिंग्स में टीम लीडर होता है ना, चेयरपर्सन होता है कोई ना कोई, समवन इज ड्राइविंग इट एक्टिवली। तो अगर वो बंदा नहीं है तो सब लोग चाय पी रहे हैं बाकी लोग, है ना? बाकी लोग चाय पी रहे हैं और केक खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, या कुछ या टाइम वेस्ट हो रहा है ना? लाइक सिक्स थिंकिंग हैट्स में हम बहुत सारा और आगे देखेंगे, दिस अनदर दिस थिंग, बट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यू आर राइट, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मतलब द टीम इज एबल टू ड्राइव ऑन इट्स ओन। देयर इज नो टीम लीडर, there is no tech lead present. Maybe tech lead is part of the team, yes definitely, but the team is self organizing. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मतलब अगर समझो टेस्टर ने कोई सजेशन दिया तो फिर ठीक है, डेवलपर इज लिसनिंग टू इट एंड देयर इज अनदर पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड, फिर बीए इज आस्किंग डाउट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट देयर इज नो एक्टिव वन पर्सन लीडिंग एवरीवन। टीम का कोई कैप्टन नहीं है, इज व्हाट आई मीन। द टीम इज एबल टू ड्राइव इट्स ऑन इट्स ओन, बिकॉज अजाइल प्रिंसिपल सबको पता है, इसलिए बिकॉज गाइडलाइंस पता है, बिकॉज पता है टीम का या मीटिंग का एजेंडा पता है, they are able to organize itself at runtime also. Not only like Bhupinder said, that is also true. They are able to organize well on its own without a leader, but in the meeting also. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा कुछ नया भी इसमें से आपको शायद ये होगा। ठीक है, तो विल जस्ट से बेस्ट आर्किटेक्चर्स, रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन। तो इसमें बहुत सारा पावर व्हाइट बोर्डिंग पे आ जाता है, डूडलिंग पे आ जाता है, थिंकिंग टुगेदर एंड लॉट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स का इसमें यूज होता है। So agile teams should be quick. Agile teams should be self-organized. They should be able to whiteboard a session on their own without any active or one person playing the leader role maybe in the whole meeting. Okay. Okay. The team reflects on how to become more effective and then tunes and adjusts his behavior accordingly. तो ये हम देख रहे हैं कि the team is reflecting on how to become more effective with time. Fine tuning हो रहा है, adjusting the behavior हो रहा है. So this is mostly covered in part of self organizing itself. तो हमने एक एक काफी इसमें डिटेल में कवर किया है, so that some of these points will relate to each other, as you may relate by now. So team is able to fine tune inputs, है ना, to get the right outputs. Then they can adjust their behaviors or processes accordingly. Very nice. So we have covered 12 principles. Okay, I'll not summarize them again, but I hope you have understood some of them or all of them maybe. But let's see a very nice, very beautiful summary here that will make drive the points home. Drive the points in your heart and the brain easy. तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल इन्फोडूडल टाइप का बनाया है, यू कैन सी इट्स वेरी वेरी नाइस। इसमें समराइज्ड वे में बताया पीपल एंड इंटरेक्शन। यू सी द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन द टॉप लेफ्ट, दिस इज पीपल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। तो ये इन्हीं अजाइल जिन्होंने बनाया था मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स, उन्हीं लोगों ने ये 4 समरी भी बनाई है। ठीक है, हमने उसको विजुअलाइज किया है यहाँ पर। तो पीपल एंड अटेंशन ओवर प्रोसेस एंड टूल, तो प्रोसेस एंड टूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीपल एंड इंटरेक्शन, अगेन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। You see lots of info-doodling sample example on the top left quadrant. तो people and interaction should be given more importance than process and tool. तो वो लकीर का नहीं है कि हाँ ये बना के रखा है तो 1 to 10 यही फॉलो करना है। अब वो गलत भी हो सकता है या स्टेप्स चेंज हो गए समझो एपीआई चेंज हो गया, फील्ड ब्रेक हो गए, तो वही टेस्ट केस नहीं चलेगा, आपको चेंज करने पड़ेंगे स्टेप्स, कुछ स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे। So someone will say, अरे ये ब्रेक हो रहा है, इसको ठीक करो। So people are more important. Interaction is more important. Process and tools come secondary. They are important, but they come below the people. Then on the right, top right, you see customer collaboration. Very important over contract negotiation. तो contract negotiation में, yes, it's part of non-functional requirement. Contract भी होता है. There are lots of मतलब contract in the sense guidelines or boundaries of your software. But customer collaboration is more important. And on you see the third quadrant, working software over comprehensive documentation. तो documentation नहीं करना है ऐसा मत समझो इसका मतलब, but working software is preferred. जैसे हमने देखा working software को priority था पीछे. Software working is a measure of progress. Documentation is also very very important. Don't get this thing wrong impression on this. But working software should be given priority. अगर कोई बोलता है कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंट है और इस पूरे एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है और इस एपीआई का एक पीओसी बनाना है, सो यू शुड गिव प्रायोरिटी टू द पीओसी, बिकॉज इफ योर एपीआई इज वर्किंग सॉफ्टवेयर वर्किंग ऑन इट्स ओन, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंटेशन अराउंड इट। नहीं तो ऐसा हो जाएगा स्प्रिंट खत्म हो गया एंड यू हैव ओनली द डॉक्यूमेंटेशन इन योर हैंड बट यू डोंट हैव एनी वर्किंग सॉफ्टवेयर, देन वी आर नॉट फॉलोइंग अजाइल प्रिंसिपल हियर। ठीक है, फोर्थ बॉक्स इज वेरी सिंपल, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो ये राइट साइड पे देखो जो बॉक्स है क्वार्टरली प्लान जो डब्बे डब्बे हैं, दिस इज वाटरफॉल मॉडल जिसकी हम बात कर रहे थे, और जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज अजाइल।
जो you see the arrows, right? They are mingling into each other like yin yang, basically eating into each other. इसका मतलब ये continuous iterative process होता है, ये continuous delivery हम बोलते हैं, right? हम continuous बहुत बार सुना हमने slide में, continuous an early release of software. CI/CD में भी हम continuous सुनते हैं. तो वो continuous मतलब ये loop. What is the loop? We are not following sequential and freezed requirements. We are changing over time. Our sprints are very quick. Or let's say sprints should be quick. Okay. So it's very simple. हम काफी सारे लोग सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरा होता है, ये होता है, वो होता है. There is lots of hundreds and basically millions of things around agile. But this is the core. तो हमने यहाँ पे अभी सिंपल देखा ना कि ये जो 4 बॉक्सेस भी आपको समझ में आ गए ना, then that is enough. You know the basics of agile. अगर आपको ये 4 भी आ गया. So this is a attempt to summarize those 12 points. ये 4 किसी को 12 भी नहीं पढ़ना है तो ये 4 ही you can understand and it will give you a holistic view of agile. ठीक है.